द सेकंड पार्ट इसमें हम सपोज करते हैं कि लेट कैपिटल W1 इज द सुप्रीमम ऑफ f of x when xi minus 1 x steric and W2 is the supremum of f of x on the interval x lies between x steric and xi. Capital Mi is the supremum of f of xi minus 1 x. Okay. Now from here we can write Mi is greater or equal to W1 and Mi is also greater or equal to W2. Is this right? Yes, sir. Yes, because capital Mi is the supremum of the interval xi minus 1 to xi, and W1 and W2 are the supremums on these subintervals. So this will be greater or equal to 0. Now consider हम कहते हैं U P F alpha minus U P steric F alpha is equal to Mi alpha xi minus alpha xi minus 1. P steric में हमारे पास x steric एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था, वो उसके साथ वाली टर्म्स पे आ जाएंगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगी. Alpha x steric minus alpha of xi minus 1 minus W2 alpha of xi minus alpha of x steric. ठीक हो गया. ये हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए. अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें इस टर्म को. Mi अल्फा x steric, इस टर्म को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं. बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो उसके अलावा खत्म हो जाएंगी. ये टर्म हमारे पास आ जाएंगी और इनमें हम ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. Mi अल्फा x steric. सो हमारे पास आ जाएगा Mi अल्फा xi माइनस अल्फा xi माइनस 1 प्लस Mi अल्फा x steric माइनस ये Mi नहीं है, माइनस अल्फा x steric. ये हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया इसमें. ठीक हो गया. माइनस W1 alpha x steric minus alpha of xi minus 1 minus W2 alpha xi minus alpha x steric. ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास. अब कॉमन ले लें. दिस implies U P F alpha minus U P steric
F alpha is equal to mi minus w1 alpha x steric minus alpha xi minus 1, ये कॉमन आ गया और प्लस mi minus w2 xi minus steric, ठीक हो गया. Our since alpha is monotonically increasing and we have noticed that these terms are greater or equal to 0, so this whole is greater or equal to 0. This implies u p f alpha minus u p steric f alpha is greater or equal to 0. This implies u p steric f alpha is less or equal to u p f. ठीक हो गया. This completes the proof. ये चीज हमें proof है. जी, हमने सपोज किया कि लेट कैपिटल W1 is the supremum of f of x when x lies between xi minus 1 to x steric, and W2 is the supremum of f of x when x lies between x steric and xi, and capital Mi is the supremum of f of x when x lies between xi minus 1 to xi. So from here it is obvious that capital Mi is greater or equal to W1 and capital Mi is also greater or equal to W2. Now consider UPF alpha minus UP steric F alpha is equal to, जो हम अपर सम की डेफिनेशन लगाएंगे तो जो स्टेरिक के अलावा वाली टर्म्स होंगी वो सब कैंसिल हो जाएंगी, पीछे जो हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी वो ये तीन टर्म्स होंगी. ठीक हो गया. P में आएगा xi माइनस 1 वाली और इस P स्टेरिक में आएंगे हमारे पास x स्टेरिक के साथ, क्योंकि x स्टेरिक is an extra element which is present in P steric but not in P. So we have UPF alpha minus UP steric F alpha is equal to capital Mi into alpha xi minus alpha xi minus 1 minus W1 into alpha x steric minus alpha of xi minus 1 minus W2 alpha xi minus alpha x steric. Now adding and subtracting capital Mi alpha x steric, we get UPF alpha minus UP steric F alpha, ये F है, alpha is equal to, इस टर्म में हम alpha x steric को add and subtract कर. अब यहाँ से हम कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा Mi minus W1 alpha x steric minus alpha of xi minus 1 plus Mi minus W2 into alpha xi minus alpha x steric. Steric. So this implies that since alpha is monotonically increasing, and we have noticed that these terms are also greater or equal to 0, so this implies that this whole is greater or equal to 0. Now shows that UPF alpha minus UP steric F alpha is greater or equal to 0. This implies UP steric F alpha is less or equal to UP F alpha. This completes the proof. Our next theorem is, let f be a real valued function defined on the interval AB and alpha be a monotonically increasing function on the interval AB, then prove that
lower integral is less or equal to upper integral. ये हमने प्रूव करना है. प्रूफ हम करते हैं. Let P steric be the common refinement of P1 and P2. Then P1 F alpha less or equal to L P steric F alpha, which is less or equal to UP steric F alpha, which is less or equal to UP2 F alpha. क्या मैं यूं लिख सकता हूं? जी. Can I write? जी सर, ठीक है सर. ठीक है ना? जी सर. देखें अभी ये जो टर्म, ये जो फर्स्ट, ये कपल और ये कपल, ये तो अभी हमने प्रूव किया जो पिछला थ्योरम था. ठीक हो गया. ये दोनों चीजें तो आ गई वहां से हमारे पास, और ये हम जानते हैं कि लोअर सम कैन नॉट एक्सीड अपर सम, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट एज. ठीक हो गया. यस सर. Now this implies LP1 F alpha is less or equal to UP2 F alpha. इसको आप नंबर 1 कह लें. ठीक हो गया. Now if we fix P2, ठीक हो गया. P2 को अगर हम फिक्स कर लें, एक फिक्स कर लें और सुप्रीमम ले लें P1 पर, तो हमारे पास क्या बनेगा? क्या चीज थी हमारे पास? LP1 F alpha is less or equal to UP2 F alpha. अब हम P2 को फिक्स रख रहे हैं और P1 पर सुप्रीमम ले रहे हैं. ठीक हो. ये तो फिक्स हो जाएगा, इसका सुप्रीमम भी यही आ जाएगा इस साइड का, तो हमारे पास ये आ जाएगा सुप्रीमम L P1 F alpha. ये फिक्स है, इसका ये चीज भी हमारे पास ये आ गया. सो ये क्या चीज है? लोअर इंटीग्रल. लोअर इंटीग्रल. सो दिस इज योर लोअर इंटीग्रल, लोअर Riemann's integral. अब P1 को फिक्स रखें और P2 पर इन्फिमम ले लें, तो ये साइड लेफ्ट साइड हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, और राइट साइड क्या बन जाएगी? अपर इंटीग्रल. अपर इंटीग्रल. इन्फिमम ऑफ सेट ऑफ अपर सम्स इज अपर इंटीग्रल. So this completes the proof. टेक्निक सिर्फ यही थी इसमें कि आपने एक मरतबा P2 को फिक्स करना है, दूसरी दफा P1 को फिक्स करना है. ठीक हो गया. थ्योरम तो हमारे पास कि जी लेट f be a real valued function defined on the interval AB and alpha be monotonically increasing function on AB, then we have to prove that lower integral is less or equal to upper integral. Now let P steric be the common refinement of two partitions P1 and P2. Then LP1 F alpha is less or equal to LP steric F alpha, which is less or equal to UP steric F alpha,
which is less or equal to UP2 F alpha. ये दो फर्स्ट कपल और सेकंड जो है ये हमने अभी लास्ट थ्योरम में प्रूव किया. This can be written as lower sum cannot exceed upper sum. So from here we have LP1 F alpha is less or equal to UP2 F alpha. अब F2 को P2 को हम फिक्स कर रहे हैं और P1 पर हम सुप्रीमम ले रहे हैं. तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा लोअर इंटीग्रल इज लेस और इक्वल टू अपर सम ऑफ F corresponding to P2. अब P1 को फिक्स रखिए और P2 पर इन्फीमम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा लोअर इंटीग्रल इज लेस और इक्वल टू अपर इंटीग्रल. तो दिस कंप्लीट्स द. नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रीमान स्टिलिजेस इंटीग्रेबल फंक्शन. मैं एक दफा स्लाइड्स दोबारा चला दूं, आप में किसी ने नोट करना हो तो वो नोट करें. ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन थी रीमान स्टिलिजेस इंटीग्रल की. जी ये हमारे पास है कि F इज रीमान स्टिलिजेस. R अल्फा मतलब ये F बिलोंग्स टू R अल्फा. इसका मतलब है कि F इज रीमान स्टिलिजेस इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन द इंटरवल AB. ठीक हो गया. इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स अ पार्टीशन P such that upper sum of F corresponding to P minus lower sum of F corresponding to P is less than epsilon. अब हमारे पास प्रूफ के दो हिस्से होंगे. एक हिस्से में हम इसको कंसीडर करेंगे और इस स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे और प्रूफ करेंगे F is रीमान इंटीग्रेबल, और दूसरे में हम ये कंसीडर करेंगे कि if F is रीमान स्टिलिजेस इंटीग्रेबल then we have this statement. जी चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. सपोज करते हैं कि ये होल्ड करती है. लेट इज लेस देन एप्सिलॉन. दिस होल्ड्स. ठीक हो गया. नाउ is this true? जी डॉर बॉक्स में हमने ये देखा था और मैंने आपको बताया भी था. जी लोअर सम इज लेस और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल इज लेस और इक्वल टू अपर सम. जी एनीवन? यस सर. बताया था ना? यस सर. कैसे आया बताएं. क्योंकि सर जो अपर इंटीग्रल है और लोअर इंटीग्रल है वो इसका लोअर सम का सुप्रीमम होता है.
लोअर सम, सेट ऑफ लोअर सम्स का सुप्रीमम होता है। सुप्रीमम इसका होता है। मतलब है वो बाकियों से तो बड़ा ही होगा। यस सर। ठीक हो गया। और अपर Yes, सम sir. जो है वो अपर इंटीग्रल जो है वो सेट ऑफ अपर सम्स के इन्फीमम के बराबर इनफिमम है। होता है। तो इसका मतलब है बाकियों से तो वो छोटा होगा। ठीक छोटा हो होता गया। छोटा। अच्छा, नाउ दिस इंप्लाइज L P F alpha is this true? जी बताएं जी, क्या ये ठीक है? जी सर। जी जी सर ट्रू है। ट्रू है, बिकॉज लोअर सम इज लेस देन लोअर इंटीग्रल, एंड अभी हमने प्रूव किया कि लोअर इंटीग्रल इज लेस देन अपर इंटीग्रल, एंड अपर इंटीग्रल इस जगह से हमें पता है कि अपर सम से छोटा हो। Lower. अच्छा जी, इसका मतलब है कि लोअर इंटीग्रल माइनस लोअर सम इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है जी, ठीक है कि नहीं ठीक? ठीक है सर। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है। ये हमने नंबर 2। अब एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करें, हमारे पास आएगा पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू 0। 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया। सो दिस इंप्लाइज, इसको दूसरी तरफ ले जाए, इन टर्म्स को हमारे पास आ जाएगा अपर इंटीग्रल वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस लोअर इंटीग्रल अल्फा, ये हमने कंसिडर किया हुआ था लेस देन किसके है? एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन के। ठीक हो गया। नाउ दिस इंप्लाइज अल्फा यहाँ सॉरी माइनस था, माइनस is less than epsilon. Now this implies is equal to 0, है ना जी? बताएं। Yes, रियल sir. वन में, हाँ जी, रियल वन में Yes, था sir. 0 is less than epsilon is less than 0 is less than a is less than epsilon. This implies a is equal to 0. This implies this term is equal to 0. This implies a to b f d alpha is equal to a b f d alpha. अब लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल है, तो इसका क्या मतलब है? ये रिमान इंटीग्रल। फंक्शन इज रिमान स्टिलेजेस इंटीग्रल। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे जी, बताएं। तो इसको रिमान से कंसीडर करके चलेंगे। जी करें जरा, ट्राई करें। सेकंड कन्वर्स है इसका,
उसमें हम रिमान इमेज इज इंटीग्रेबल इसको सपोज करेंगे और कंडीशन वो वाली प्रूव करेंगे, दैट इज यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। आपको याद होगा कि जब डॉरबॉक्स इंटीग्रल में हम इस तरह की चीजें कर रहे थे तो हमने एक डॉरबॉक्स लेमा यूज किया था, उसी तरह की चीज यहाँ भी यूज होगी।